I'll be able to identify myself from other person. Okay, so that is how I can be identified from one person to another person. Second, उसके बाद ये जो attribute है इसके कुछ types है. There are certain types of attributes. Okay, so the attributes type that we have seen is whether an attribute can be simple or it can be composite. Okay, so simple और composite का मतलब क्या होगा, या तो atomic होगा या तो non atomic होगा. Atomic का मतलब क्या होता है, which cannot be further divided. Okay, जिसको आप further divide नहीं कर सकते. Composite का मतलब which can be further divided. So the name that I have, will it come under simple or composite? The name of a person, will it come under simple or composite attribute? Composite. Composite, because it can be further divided into first name, middle name, and last name. Okay, so I can divide the first name and last name. I can divide the name into different composite attributes. What about contact number? The contact number that I have, will it be composite or simple? Simple. It will be simple because in contact number cannot be divided. Okay, so मेरे पास एक number है, वो number मैं 5 number या 3 number या 2 number उसमें से use नहीं कर सकता. I have to use the whole number. Okay, so this is simple one. Next is I can have the attribute which are derived attribute. So ये derive कहाँ से करेंगे? It would be derived from some other stored attributes. So अगर कोई derived attribute होती है, these are the attributes which are not physically present but are generally derived from other attributes. For example, my age. Okay, so the age can be derived from the attribute called as date of birth. So from date of birth, I can say that what will be my age. Okay. Similarly, अगर कोई एक author है, okay, so the author has written certain books. So the number of books can be identified by the number of books that he has written. So depending on the different number of books or the name of the books that he has written, I can count those number of books and I can say that the following number or the following author has written so and so number of books. So the number of books can be derived in that situation. Okay. Next, we can have attribute as a single valued attribute or a multi-valued attribute. Okay, so single value attribute will hold only one value, whereas multi-valued attribute can hold multiple values into it. Okay, for example, email ID, will it be single valued or multi-valued? Multi-valued. Multi-valued. So a person can have multiple email IDs. What about contact number? Multi-value. Again, it can be multi-valued. What about addresses? Can a person have 2 addresses? They can have, right? Multi-value. So it will be a multi-valued. So a person can have a corresponding address, or it can also have the address which is native to it, या native address या उसका जो गांव का घर है. Okay, so it can have multiple address also. So it depends on your scenario. अगर आप single valued रखना चाहते हो तो single बनाओगे आप. Multi-valued अगर रखना चाहोगे तो it is compulsory कि आप multiple values को भी store कर सकता है. Okay, so it depends from scenario to scenario. Okay, for example, जैसे अगर मैंने एक application बनाया जिसमें एक ही contact number देना है, so in that case the contact number will be single value. Okay, अगर आपने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जितना भी कॉन्टैक्ट अगर आपको मिल सके किसी भी बंदे का, so in that case the contact number will be multi-value. So it depends on application to application. It depends on you. That is why I'm saying that every ER diagram will be different from each other. Okay, because in one person mind the person has thought that कि वो contact number एक ही रखेगा. Okay, so उसके लिए जो contact number है that is single valued. For other person who thinks that कि security purpose के लिए why not I have 2 more contact numbers, or why cannot I have more number of contact numbers. So in that case, from his perspective, the contact number will be multi-valued. समझ में आया? Is it clear? Is it clear, guys? Yes, sir. Okay. So now we'll be moving to the next topic. The next topic is called as entity and types of entity. Okay. So entity set, what is an entity set? It is nothing but it is a collection of different entities. Okay, so for example, a student can be an entity set which have different number of students there in it. Then a book can be an entity, a course can be an entity, a department can be entity. Okay, so there are different entities that we have. Okay, so today we'll be discussing what is an entity or entity set and types of it. Okay, types of it, what are the different types of it and what are its representation. Okay, so entity जो है आपका वो या entity set वो होता है जो कि एक real world object होता है जिसको आप identify कर सकते हो with the help of its properties. Okay, and इनकी collection को we call it as entity type or entity set. So similar type of entity will be called as a entity type and collection of these entity will be called as entity set. Okay,
So student, example that I can give is student. Okay, and generally इसका representation is rectangle. Okay, so rectangle student, then teacher can be an entity. Okay, so अगर एक टीचर को दूसरे टीचर से अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उनका attribute आपको यूज करना पड़ेगा. So student will have the roll number, they will have the name, they will have the address, etc. Similarly, teacher will have their employee ID, they will have their department that they are teaching in. They will be having their contact number, their addresses, etc. In order to identify themselves from one another. Okay, so these are called as entity. Now the entity is further classified into two different categories. Okay, entity को आप दो category में define कर सकते हैं. Okay, the first category is called as a strong entity set or strong entity type. Okay, strong entity type. Okay, what would be the opposite of it? Strong का opposite would be weak. Okay, so weak entity type would be the second category of, or the second type of the entity type. So दो कैटेगरी है हमारे पास, एक या तो एंटिटी स्ट्रांग होगी या तो एक वीक होगी. So the difference is, in strong entity you will be having a key attribute. Do you remember what is key attribute? Can anyone tell me what is key attribute? The attribute Unique. which are uniquely identified. Yeah, so an attribute which uniquely identifies the different entity in an entity set. यानी अगर आपको मुझे uniquely identify करना है, so मैं आपके नाम से मैं आपको identify नहीं कर पाऊंगा, because एक class में there can be a multiple person having same name. आपके डेट ऑफ बर्थ से आई कैन नॉट आइडेंटिफाई. देयर माइट बी अ चांसेस दैट कि डेट ऑफ बर्थ एक दिन के अंदर दो बच्चों का सेम डेट ऑफ बर्थ होगा. ओके, सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी. Similarly, address may be, because some many of you people will be there in Nala Sukara, कोई विरार का होगा, जो व्यवसायी का होगा. So address के basis पे भी also I cannot identify. The unique identification for a student will be its ID or roll number. Okay, so student के लिए unique identity will be roll number. So such entity which will have a key attribute in it, that entity will be called as a strong entity type. Okay, so just write down the definition. What is a strong entity set? First, write down entity can be of two different types. One is called as a strong entity type and other is called as a weak entity type. Just write down entity type can be of two different categories, can be divided into different categories. The first category is called as a strong entity type and second one is called as a weak entity type. So what is a strong entity type? It is entity type which has key attribute. It is an entity type which has key attribute. It is an entity type which has key attribute which uniquely identifies each entities in it, each entity in it. Okay, write down the second point. The strong entity can also be called as independent entity. Strong entity can also be called as independent entity. The strong entity can also be called as independent entity, as it does not depend on another entity for its identification. As it does not depend on another entity for its identification. Okay, is it clear? समझ में आया क्या बोला सेकंड पॉइंट में? पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज कि एंटिटी जिसके अंदर की एट्रीब्यूट होगा, दैट एंटिटी विल बी कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप. ओके, सेकंड क्या बोल रहा है कि इस एंटिटी को, इस टाइप के एंटिटी को हम इंडिपेंडेंट एंटिटी टाइप भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर के जो एंटिटी को आइडेंटिफाई करना है वो खुद ही डिपेंडेंट है, वो खुद ही अपने हिसाब से, उसके पास खुद ही एट्रीब्यूट है जिससे वो अपने अंदर जितने भी एंटिटी होंगे सबको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा. उसको कोई और दूसरे एंटिटी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी. तो सच एंटिटी विल बी कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एंटिटी. इज इट क्लियर? Is it clear? Yeah. So a student, will it be a strong entity or will it be a weak entity? Student. Can you identify a student uniquely? क्या आप हर एक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं? By what attribute? What will be the name of the attribute?
by which you can identify it. Roll number. So roll number will become key attribute. Yeah, key attribute को define करने के लिए what we use in ER diagram. What is symbol of key attribute? Underline. Underline the attribute. Okay, so in this case, the roll number will be the key attribute, and because the student has a key attribute, student will be a strong entity type. Okay, what about teacher? Can a teacher be uniquely identified? Can one teacher from other teacher, can they be uniquely identified? Yes. Yes. So the teacher should also have a employee ID या teacher ID या कुछ ना कुछ उनके पास भी एक ID होगा, because same person same name can be a person will or different teacher will have same name as well. There might be a possibility. Okay. So for example, Vivek Solanere sir, which is in IT department, and Vivek Nanaure sir is from mechanical department. Both are having same name. Okay. So their first name is similar. So we cannot identify them by their first name. Okay. So in that case, we have to take a help of employee ID. So another employee will have the different employee ID, different employee will have different employee ID. So all the employees will be having the different or their respective employee ID. So by which we can easily identify whom we are talking about. Okay. So for example, my employee ID 618. Okay. So अगर मैं 618 का information चाहूँगा तो 618 से मुझे मेरा नाम पता चल जाएगा, मुझे मेरा एड्रेस पता चल पाएगा, मुझे मेरा आधार नंबर, मेरा पैन नंबर, ये सारा इन्फॉर्मेशन मुझे उस एम्प्लॉय आईडी से जो भी डेटाबेस में रहेगा तो मैं यूनिकली आइडेंटिफाई करके सारा इन्फॉर्मेशन, सारा रिकॉर्ड मुझे बड़े आसानी से मिल जाएगा. So again, employee ID in this case will be a key attribute. So since it is a key attribute, it will be underlined. Okay. So since an entity will have a key attribute in it, such entity will be called as a strong entity type. Is it clear? Strong entity is clear to you? Yes, sir. The next important one is called as weak entity. Okay, so weak entity is very important one. So please make sure to identify. क्योंकि identify कर पाना weak entity is a difficult task, a little bit of difficult task. So what is weak entity type? Weak entity type is nothing but इसके अंदर जो भी आपका key attribute होगा that is missing. Okay, so key attribute नहीं होगा. Okay. Second, दूसरी चीज क्या है? इसके अंदर जो dependency है दैट इज देयर. मतलब अगर मेरे को वीक एंटिटी के अंदर कुछ भी फाइंड करना है या वीक एंटिटी को अगर यूनिकली अगर एंटिटी को आइडेंटिफाई करना है तो आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ अदर एंटिटी. यानी ये जो एंटिटी है किसी के ऊपर डिपेंड करेगी, तो सच एंटिटी विल बी कॉल्ड एज अ वीक एंटिटी सेट. सो व्हाट इज अ वीक एंटिटी सेट? इट इज एन एंटिटी सेट which does not have a key attribute in it, because of which it is difficult to identify each entity associated in it by itself. Okay, so that is called as weak entity type. In order to identify its entity, in order to identify each entity, it has to take help from other entity. So it has to be dependent on another entity. That is why this will be also called as a dependent entity type. Is it clear? समझ में आया? Is it clear? Am I audible to you? Yes. Yes. Okay, I'll give you example. I will give you example, but before giving the example, just write down the definition of it. एक बार definition खत्म करते, we'll go to the example. What is weak entity type or how to define it? Just write down the example definition. An entity type that does not have any key attribute. An entity type that does not have any key attribute. That does not have any key attribute of its own is called as weak entity type. An entity that does not have any key attribute of its own is called as weak entity type. The second important point is, so a strong entity was called as independent entity type. This will be called as dependent. So write down, it is also called as dependent entity. It is also called as dependent entity. It is also called as dependent entity as it depends on another entity, as it depends on another entity for its identification. For its identification. For its identification. Okay, the last important point, mark it as the most important point, okay, which will help you to identify it. The weak entity
has no meaning. The weak entity has no meaning without the entity on which it depends. The weak entity has no meaning without the entity on which it depends. यानी अगर जो जिस एंटिटी पे डिपेंड रहती है, अगर वही एंटिटी नहीं है तो उसका मतलब वीक एंटिटी भी नहीं रहेगा. ओके, so the weak entity has no meaning without the entity on which it depends. Okay, and lastly, it is represented by double rectangle या ओवर कॉन्सेंट्रिक रेक्टेंगल. ओके, सो एक रेक्टेंगल है उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल आप बना दो, सो इट विल बिकम अ वीक एंटिटी. सो द रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस. और नॉर्मल एंटिटी या स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप जो है वो सिर्फ एक रेक्टेंगल से आइडेंटिफाई होता है. वीक एंटिटी आप दो रेक्टेंगल से आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, सो एग्जांपल दैट आई कैन गिव इज देयर इज a book. Okay, there will be a book. So book और कुछ book का there are addition associated with the book. Okay, कुछ book का there will be addition. So a book has an addition. Okay, so both are entities. Book is also an entity. Addition is also an entity. So book की entity का कुछ attributes आप बता सकते हो? What are the attributes of book that a book can have? What are the attributes? One, it will be having a ISBN number, which is the book unique number for each book. You know, right? ISBN number. Then we have book name. Okay, book name. Then we have author name. Okay, so these are some ways of identifying the book. We'll also have some price associated with it as well. So, book का कुछ price होगा. There are some other attributes such as page, number of pages, or ऐसा कुछ attributes होगा. Edition. For edition, we can have edition number. Okay, edition number. इसके बाद edition year. I can have edition year. Okay. Now tell me, a book can be uniquely identified. Can a book can be uniquely identified? Book को आप uniquely identify कर पाओगे? Yes. On what basis? On what basis? ISBN number. You have got an ISBN number जो कि हर एक book का एक unique होता है. So this attribute will become key attribute, right? So आपको उसको underline करना होगा. So since I have underlined ISBN, it has become my key attribute, and I am able to identify my individual book. So for example, अगर मुझे कोड करके बुक है which is for database management system, so कोड बुक को मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा with the help of the ISBN number that it has. Similarly, अगर मेरे को फॉरूजन बुक करना है for computer networks, that I can identify. Similarly, अगर मेरे को जावा के लिए complete reference find out करना, I can identify with the respect to ISBN number. Okay, name, yeah, can I identify with name? No, there might be chances कि same name के बहुत सारे books हो. Okay, so there might be chances for that. Okay, similarly, a person or an author can write down multiple books. So based on that, we can also not identify. Price, we cannot identify on the basis of the price of the respective books. So books will only be identified with the help of ISBN number only. So is it a weak entity or a strong entity? Is book a weak entity or strong entity? It is strong entity Strong. because it has a key attribute in it. Now we'll go to the second entity. Second entity is called as edition. Okay, so every book has an edition. Okay, for example, the current book that I have shared with you for Koth is 7th edition. Okay, the slide that I'm sharing, that slide is for your 6th edition. Okay, so ये edition क्या होता है? There might be certain changes in the book. There might be certain changes into the concepts, या कुछ book के अंदर से कुछ concept को drop down कर दिया गया, या कुछ changes आ गया concept के अंदर, तो इसकी वजह से book को upgrade करना पड़ता है. You have to upgrade your books. Okay, so that is called as edition. Okay, so ये जो edition होता है वो आप yearly या 2 साल में या 3 साल में जब भी कुछ changes होगा वो change करते रहते हो. Okay, so that is called as edition number. So a book can have edition number 1, it can have 2, it can have 3, etc.
ऑल्सो एडिशन ईयर मतलब किस ईयर में उसका न्यू एडिशन आया था. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि एक ही साल में दो दो एडिशन आ जाए, हो सकता है कि 4 साल में एक एडिशन है, तो रिस्पेक्टिव ईयर विल बी द रिस्पेक्टिव एडिशन ईयर, उसके अंदर वहाँ पे उसका डेटा आएगा. फॉर एग्जाम्पल द कोर्ट का 7th एडिशन इज द 2020 ईयर का एडिशन, द पब्लिशिंग ईयर इज 2020, the edition year will be 2020 and the edition number for court will be 7. Okay, so can you identify the edition uniquely? क्या edition को आप uniquely identify कर पाओगे क्या? No. No, because court will also have the 7th edition. Also there might be chances कि some other book जैसे कि आपका मैथ्स का कोम्बोचकर can also be have its 7th edition. Okay, there might be chances कि जावा का कोई बुक है जो कि जिसका 7th edition होगा, so there might be chances that different number of books will have different number of edition. Though edition is an attribute but it cannot uniquely identify the edition. Okay, so वो book किस edition की बात चली या किस book की बात चल रही है, that cannot be identified. Okay, so such type of entity will be called as weak entity because it does not have any key attribute. और उसको represent करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, double rectangle बनाना पड़ेगा. ऐसे clear? Is weak entity clear to you? Yes, sir. Okay, I'll take another example. Yes. और example ले लेते हैं ताकि ये segment की तरह जम जाए, समझ में आ जाए आपको. So another example that I can give is a doctor. Okay, so doctor is an entity, and a doctor can perform. And doctor can perform. What can it perform? It will perform what? Operations. So operation will be my second entity. Okay, so it is my second entity. So डॉक्टर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा, डॉक्टर का आईडी होगा, तो डॉक्टर विल हैव इट्स आईडी, डॉक्टर विल हैव इट्स नेम, इसके अलावा डॉक्टर का कुछ कॉन्टैक्ट नंबर होगा. दीज आर सम ऑफ द एट्रीब्यूट. क्लियर है ना ये? दिस इज क्लियर राइट? इज इट क्लियर? व्हाट अबाउट ऑपरेशन? Yes. अगर ऑपरेशन होगा, लेट्स से अगर आपका कोई भी, लेट्स अज्यूम अगर आप कभी हॉस्पिटल गए होगे, तो ऑपरेशन कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो? ऑपरेशन किस थिएटर में हो रहा है, राइट? इन विच रूम ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म, सो देयर विल बी अ ऑपरेशन रूम नंबर, राइट, जहाँ पे ये परफॉर्म हो रहा होगा. तो लेट्स से इट इज ऑपरेशन नंबर. सो देयर माइट बी, एक हॉस्पिटल में 3 ऑपरेशन थिएटर है, 3 ऑपरेशन रूम्स है जहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा. सो इट विल बी रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3. ओके, सेकेंडली ऑपरेशन डेट क्या है, सो ऑपरेशन कौन से दिन पे हो रहा है, सो दैट वुड बी देयर, दैट वुड बी रिकॉर्डेड. उसके बाद ऑपरेशन टाइप क्या है, वेदर इट इज कार्डियो टाइप या इट इज पेडियाट्रिक टाइप यानी चाइल्ड का, या वेदर इट कैन बी ऑर्थोपेडिक या हड्डी का. सो वॉट एवर द टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट यू परफॉर्मिंग, दैट विल बी द एसोसिएशन ऑफ इट. ओके, so on that basis can you uniquely identify the operation, each operation? A doctor can be uniquely identified. First tell me, can a doctor be uniquely identified? Yes. Because it has a doctor ID. So doctor के पास एक ID है, उस Yes. ID से आप बता सकते हो कि वो डॉक्टर कौन है, क्या है, दूसरे डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर से आइडेंटिफाई कर पाओगे. ओके, बट फॉर ऑपरेशन देयर माइट बी अ चांसेस कि ऑपरेशन यानी ऑपरेशन थिएटर 1 में, ऑपरेशन थिएटर 1 में आज की तारीख है, व्हाट इज द डेट, टुडेस डेट 18th right? हाँ. So 18th of August को there was an operation which was being performed, and that operation was, let's say, appendix operation. Okay, it was an appendix operation that was being performed. Okay, similarly operation number room number 2 में same date को there was let's say cardio operation which was being performed on heart. Okay, so a cardio operation is being performed. Let's say operation number 1 में same date को, टाइमिंग अलग होगा बट सेम डेट को, लेट्स से कोई पेडियाट्रिक ऑपरेशन हुआ, कोई चाइल्ड का किसी बच्चे का एक ऑपरेशन हुआ. ओके, सो on this basis, on the data that I have collected, can I uniquely identify the different types of operation on any on a single attribute? कोई एक attribute मुझे identify कर पाएगा? Can an operation number will identify कि क्या operation हो रहा है?
बिकॉज रोल ऑपरेशन नंबर 1 जो है वहाँ पे अपेंडिक्स भी हो रहा है, ऑपरेशन नंबर 1 में पेडियाट्रिक भी हो रहा है. ओके, इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट ऑपरेशन थिएटर दैट आई हैव. Similarly, on the same date, all the operation is being performed. So I cannot uniquely identify it. Similarly, the different types of operation that can have. So हो सकता है कि एक दिन में एक ही टाइप का 2 ऑपरेशन भी हो सकता है. ओके, सो पेडियाट्रिक जो है वो हो सकता है ऑपरेशन नंबर थिएटर नंबर 3 में भी पेडियाट्रिक हो रहा होगा ऑन 18. सो कैन आई यूनिकली आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल ऑपरेशन? कोई एक एट्रीब्यूट से कैन No. आइडेंटिफाई दैट? नो, आई कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट. सो इट इज लैकिंग अ की No. एट्रीब्यूट. इट इज लैकिंग अ की एट्रीब्यूट. So in order to identify that, I have to take a support of doctor. यानी डॉक्टर जो है वो किस ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहा है या किस ऑपरेशन टाइप पे काम कर रहा है उसका सपोर्ट ले करके. फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से कि डॉक्टर नंबर 1 या डॉक्टर आईडी नंबर 1 is there who is performing the operation on appendix, and now doctor ID number 3 is performing operation pediatric. So because of 1 and 3, because of ID number 1 and 3, because of the doctor ID, I'll be able to identify कि ऑपरेशन किसने किया या कौन से ऑपरेशन थिएटर में किया. तो ये आइडेंटिफिकेशन जो है मुझको दूसरे एंटिटी पे डिपेंड करना पड़ेगा. ओके, आई कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑन माय ओन एंटिटी. आई हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर एंटिटी. इन दैट केस दैट entity will be called as a weak entity. Is it clear? Is weak entity clear to you? Yes. Okay, so as we'll go into more detail, फिलहाल थोड़ा समझने के लिए, फिलहाल थोड़ा डायग्राम समझने के लिए ये आपको थोड़ा बहुत समझा देगा, लेकिन और डिटेल में इसके बारे में और प्रैक्टिकल नॉलेज तभी मिलेगा जब व्हेन वी मेक फ्रॉम ईआर डायग्राम, व्हेन वी मेक टेबल्स फ्रॉम इट. ओके, सो जब ईआर डायग्राम से जब हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे तब इसका ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा. ओके, फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो, अगर किसी एट्रीब्यूट में किसी एंटिटी में इफ देयर इज नो सच की एट्रीब्यूट व्हिच इज डिफाइंड, या कोई भी एक एट्रीब्यूट से आप एंटिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, या कोई एट्रीब्यूट देयर आर लैकिंग ऑफ की एट्रीब्यूट्स which will help your entity to identify from one another, such entity will be called as a weak entity. और अगर कोई एट्रीब्यूट या कोई एंटिटी में की एट्रीब्यूट होता है जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करता है, such entity will be called as a strong entity. Is it clear? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what we have discussed right now, we have discussed what is entity, what are the types of entity. So entity can be only of 2 different types. Okay, should we move to the next topic? Yes, sir. So the next topic is called as relationship. Okay, relationship क्या होता है, relationship का types क्या होता है, यानी डिग्री क्या होता है, और उसकी मैपिंग कार्डिनलिटीज क्या होता है, ये हमें डिस्कस करना है. Okay, so the next topic will be called as relationship. Okay, उसके बाद इट्स डिग्री, उसकी डिग्री क्या होती है, एंड आफ्टर डिस्कसिंग डिग्री उसकी मैपिंग कार्डिनलिटीज क्या है, ये हमें डिस्कस करना है. विल बी डिस्कसिंग दिस नाउ. Okay, once doing this we'll take some example and we'll understand how to build a ER diagram. Fine. So what is a relationship? If you want to describe a relationship, for example a student or a teacher teaches a student, what is a relationship over here? So a teacher, there will be a teacher. Teacher is nothing but it is an entity. There is a student entity as well. So in दोनों के बीच में, in order to identify the relationship between them, we have to create a relationship set called as teachers. Okay, ये क्या होता है physically, मतलब ये होता क्या है, कोई बता सकता है? What is there actually in teachers? हमने लिख तो दिया teachers, but ये होता क्या है? Why we have to maintain such relationship between the different table? 2 टेबल को जोड़ने की जरूरत क्यों है? Relationship basically, It tells the association between 2 entities. exactly, that is the definition. But what is actually means? The definition is that it tells the association. But why we require those association? Why we require association? Why we cannot hold 2 independent table as different entities? क्यों हमें उनको जोड़ने की जरूरत है? What is the requirement of having those association? तो फिर रिलेशनशिप है कैसे पता चलेगा? वो इसलिए होता है कि अगर बाय चांस किसी स्टूडेंट ने कोई डेटा अपना कैंसिल किया या एग्जाम अपना एडमिशन कैंसिल किया, तो जो टीचर रिकॉर्ड रख रहा है कि वो किसको किसको पढ़ा रहा है या ही इज टीचिंग टू होम स्टूडेंट, सो दैट data can be easily dropped out from all the tables, not only from the student table. Okay,
सो रिडंडेंसी को अवॉइड करने के लिए, डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए या डेटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए वी हैव टू हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एंटिटीज। तो अगर एक टेबल है दूसरा टेबल है, दोनों को कनेक्ट करोगे तभी आप क्वेरी कर पाओगे, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर एक टेबल में से कोई डेटा डिलीट होता है, सो दूसरे टेबल को इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए कि यस देयर इज सर्टेन डेटा दैट हैज बीन डिलीटेड। ओके, फॉर एग्जांपल अगर एक लेट्स से कोई एक ऑथर है, ओके, देयर इज एन ऑथर, the author has written a book, okay, so I'll write down the relationship as written, yeah, writes, author writes book. So let's say चेतन भगत का बुक पढ़ा है ना आप लोगों ने? So इंडिया में तो मेरे ख्याल से चेतन भगत ही पढ़ते हैं लोग ज्यादातर। You should also read authors like Dan Brown या खालिद मोहम्मद। अगर आपको suggestion चाहिए, I can give you some suggestion also for that. So let's assume Chetan Bhagat, because you guys are aware of that. So Chetan Bhagat is an author who has written down multiple books. Okay, for example, Night in a Call Center, then Three Mistakes of My Life, then Two States, then 5 Point Sermon. These are the books that he has written. So let's assume कि एक बुक का कॉपीराइट किसी ने क्लेम कर दिया। ओके, फॉर एग्जांपल 5 Point Sermon का कॉपीराइट किसी ने क्लेम कर दिया और उसको फिर वो डिलीट करना पड़ा दैट बुक। ओके, सो बुक्स के डेटा में से दैट बुक विल बी डिलीटेड, दैट आईएसबीएन नंबर, बुक का डिटेल, बुक नेम, वो सब डिलीट करना पड़ेगा। ऑथर के अंदर से भी वो बुक का इंफॉर्मेशन डिलीट करना पड़ेगा, राइट? सो द नंबर ऑफ बुक्स दैट द ऑथर हैज और द ऑथर हैज रिटन, उसके अंदर भी तो रिडक्शन होना चाहिए ना, राइट? देयर शुड बी अ रिडक्शन ऑफ द बुक्स दैट द ऑथर हैज रिटन। शुड वी डू दैट? तो अगर मैंने चेतन भगत ने 4 बुक पहले लिखी थी, द नंबर ऑफ बुक दैट ही हैज रिटन, इफ वन ऑफ द एट्रीब्यूट इज द नंबर ऑफ बुक दैट हैज बीन रिटन बाय द ऑथर, सो अगर वो एट्रीब्यूट अगर बुक से डिलीट होती है, ओके, फॉर एग्जांपल वन बुक हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द बुक टेबल, तो वो जो 4 था वो अब 3 होना चाहिए, राइट? सो दैट अपडेशन इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टेबल्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. So book is the relationship that we have, that is also a table. Okay, relationship जो है ना वो भी एक टेबल है, लेकिन ये टेबल क्या करेगा, बुक को और बुक का आईएसबीएन नंबर और ऑथर का जो नंबर होगा या आईडी होगा या कुछ भी उसका नेम होगा, दोनों को एक जगह पे रखेगा, जिससे क्या होगा, इट विल बी कनेक्टिंग टू ऑथर टेबल आल्सो, इट विल बी आल्सो कनेक्टेड टू द बुक टेबल आल्सो। सो अगर दोनों को जोड़ना होगा, सो यूजिंग दैट टेबल, यूजिंग द एंट्रीज ऑफ दैट टेबल, आई विल बी एबल टू merged by different table. Okay, so that process is called as join, जो हम आगे पढ़ेंगे, which we will be discussing in 3rd and 4th module. Okay, so join कैसे कर पाते हैं, relationship कैसे दो टेबल को हम combine कैसे कर पाते हैं, that is all we'll be discussing in the later part. So again, these are all basic concepts, these are all just diagram जो हम बना रहे हैं, लेकिन actual implementation कैसे होगा, कैसे टेबल बनेगा, कैसे इसको हम टेबल के अंदर रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, कैसे डेटाबेस बना पाएंगे, that will be discussing in the remaining part of the subject. Okay, so right now what is a relationship? In a simple line, relationship is nothing but it is an association between the different entities. Okay, so what is a relationship? It is defined as association or attachment between the different entities that we have. Is it clear? What is relationship? Is it clear to you? Is it clear? Yes, sir. Okay, the next important thing is we need to define what are the degrees of relationship. Okay, so degree का मतलब कितने entity आपस में related है. Okay, so the degree can be only one entity is related to itself. Okay, so such type the degree will be called as unary. Over here the teacher is related to student. Okay, so yeah, student is related to teacher. In this case, how many entities are related to each other? How many entities are related to each other? Teacher and student, how many entities are related to each other? 2, right? So it will be called as a degree of binary, and majority of the degrees will be in binary. The third condition is if 3 relationship or 3 entities are combined to each other. For example, there might be a student. Okay, student. It works on a project. Okay, so there will be an entity called as project. Okay, using or works using a programming language. Okay, so programming language will be entity
project will be an entity, and student will be an entity. All these are dependent on only one or related to one relationship. So such type of relationship will be called as a ternary relationship. So we have got 3 degrees of relationship. Just note down what are the different relationships that we have. The first one will be called as unary. The second one will be called as binary, and the last one will be called as ternary. Okay, so ternary में क्या होगा, अगर 3 attributes आपस में relate करेंगे, such attribute will be called as, or such relationship will be called as ternary relationship. Unary का example दे देता हूँ. There will be an employee. Okay, एक employee है. It will manage itself. Okay, it will manage itself. Okay, so this is example of unary. So only one table is related to itself. Okay, so generally it is very less, ऐसा कुछ जरूर बहुत कम होता है. The major chances and the most important relationship that we have, or 95% of relationship that we have in area diagram is generally binary. Okay, so unary अगर आप बनाना चाहो बना सकते हो, but generally ज्यादातर जो है आपके relationship वो binary ही बनाते हैं, ताकि multiple tables को आप combine कर सको. पूरे के पूरे जितने भी tables हैं आपके, वो एक दूसरे से relationship में आना चाहिए, ताकि आप कोई भी operation अगर आप कर पाओ वो सब में reflect होना चाहिए with the help of relationship. Because अगर relationship होगा तभी वो जाके affect करेगा. Okay, for example अगर मैं in computer, this relation that we are talking about ना, ये relation English का relationship नहीं है, this is a maths relationship that we are talking about. So I can say that x is related to y. ऐसा हम जब पढ़ते हैं, there is a function of x, function of s is dependent on y. इसका मतलब अगर मैं y में change करूँगा तो x में change होगा, x में change करूँगा तो y में change होगा, right? So similarly over here, each relationship is dependent on each other. यानी अगर एक table में मैं change करता हूँ तो दूसरे में affect होगा, दूसरे में change करूँगा तो it will be affected on the first table. So that is how the relationship has actually come. Relationship is not the English relationship. There has to be association that we are talking about. ये association जो है वो mathematical association की बात हो रही है. If changes is made in one of the table, then that will be reflected in the second table. Is it clear? Yes, sir. Okay. So degree कितने type के हैं? Degree are of 3 different types. One is called as a unary, second is called as a binary, and third one is called as a ternary. So what is a unary relationship? In unary relationship, the relationship is only between one entity. There is only one entity associated in that relationship. So that is called as a unary relationship. Example that you can give is employee will manage itself. So अगर employee को खुद को manage करना है, so we can give a manage relationship and it will manage itself only. Okay, we do not have any other association with some other table. Okay, or some other entity. The second example is called, second degree is called as a binary degree. Binary में क्या होगा? If two entities are associated with each other with a relationship, that relationship will have a degree of 2, and that relationship will call as a binary relationship. Okay, so example that you can give is a teacher teaches a student. Okay, so here a teacher table is associated with a student table, or a teacher entity is associated with a student table. So such type of degree of association is called as binary association. The third association is called as ternary. Ternary में if 3 attributes are associated with a single relationship, in that case that relationship will have a degree of 3, and such entity will such a relationship will be called as a ternary relationship. Example that you can give: a student writes a project or works on a project using or works with the help of a programming language that has. So we have got 3 entities having the same relationship called as works. Is it clear? Is the degree clear to you? Yes, sir. किसी को कोई doubt है? Does anybody has any doubt till now? Do you want me to repeat some point, something of that sort? Should I continue? Continue. Okay. The basics or the things that we are learning, this will become more clear when we take examples. So जब हम ER diagram का example solve करेंगे, तब ये ज़्यादा आपको अच्छे से clear होगा. Okay. Fine. So the next is called as mapping cardinalities. Okay. So mapping cardinalities का मतलब क्या होता है? कि जो आपका association है, वो association कितने entity से है, वो आपको बताना है. Okay. So mapping cardinalities. So ये जो association है, एक entity का हो सकता है एक ही entity से हो सकता है एक entity का multiple entity से हो सकता है एक
एक multiple entity का multiple entity से, so these are called as mapping cardinalities. So whatever the relationship that you have, that association that you have, that association is associated with how many entities. So that is decided by mapping cardinalities. Okay. So in mapping cardinalities, the definition you can write down in mapping cardinalities. Just write down the definition. The mapping cardinalities describes. The mapping cardinalities describes. Mapping cardinality describes how many instances of one entity type, how many instances of one entity type are linked with different instances of another entity type. ओके, सो ये उसका डेफिनेशन है, यानी एक जो एंटिटी है आपका, एक एंटिटी सेट है, उस एंटिटी सेट और दूसरे एंटिटी सेट के बीच में जो आपका एसोसिएशन है, जो आपका लिंक है, वो लिंक जो है, जो इंस्टेंस है, वो एक इसके अंदर की जो एक एंटिटी है वो कितने है इसके अंदर की एंटिटी से लिंक है. ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन दैट वी आर गिविंग एन आंसर टू. ओके, सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ टीचर, there is a student. Okay, so teacher teaches a student. Okay, so एक टीचर, मतलब टीचर के अंदर क्या क्या डिटेल होगा, what will be the teacher have? Teacher will have its ID, its name, okay, its employee ID, its contact number, etc. The student will have the similar data. So let's say एक जो टीचर है, one teacher, will it teach to only one student or many students? Many. So it will teach to many students. Many. So I can represent that many. I can represent that many with the help of M. I can represent that many with the help of N, or I can represent that many with the help of star. These are the notation that I can use. Okay. और अगर मेरे को arrows या उसके फॉर्म में अगर represent करना है, so many को represent करते हैं हम लोग straight line से. Okay. So this is the representation of many. और अगर आप pro notation की बात करोगे, तो pro notation में many are represented in this form. Okay. So आप इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फाइन, वन स्टूडेंट लर्न्स या गेट टॉट बाय ओनली वन टीचर और मेनी टीचर. Many. You as a student will be taught by only one teacher or many teacher, right? So इस केस में मतलब यहाँ पे हम जवाब क्या देंगे? What will be the answer that will give? कि this student is taught by how many such teachers? So it is taught by many teachers. So I can write down M over here because M stands for many. दूसरा mathematical term में N is nothing but it is infinite. So आप वो लिखते हैं, और programming language में आप generally star use करते हैं for infinite. Okay, so ये तीन notation आप use कर सकते हैं. Simultaneously अगर line के लिए अगर आपको दिखाना है तो line में straight line is generally many. And for crow notation we use the crow foot as the many notation. Okay, so many notation में जो crow का जो पाँव होता है जैसा दिखता है, okay, so उसमें वो represent आपका many को represent करेगा. Is it clear? Is it clear? Yes. So this is one of the association. This is one of the mapping cardinality. So ये mapping cardinality का type क्या होगा? It is many to many, one to many, or one to one, or one to many. क्या होगा? What is the mapping cardinalities? It is Many it is to many many. to many. Okay, I'll give another example. एक और example देता हूँ. There is a faculty as a teacher. Okay, so there is a faculty who are associated with. So I am taking a relationship called as associated with a department. Okay, so I am taking another entity called as department. So for example, I am Usmani. I am associated with IT department. Okay, there might be some sir called as let's say Ajay sir. He is associated with computer department. Okay, so different faculty will be associated with the respective department, right? Okay, so a faculty
is associated with only one department or many department? Can a faculty work in many department or it will work on only one department? One person. So One it is department. only dependent or it is there in only one department. A faculty can work at a time in only one department. What about department? A department will have many faculty or it will have only one faculty. Many. So it will be many faculty. So that many can be represented by star, it can be represented by n, or it can be represented by m. Over line, it can be represented by a straight line. For cross notation, it has a crow foot notation over here. For one, it can be represented by one over here. There is no nm over here. So one को सिर्फ आप notation में आप one से different कर सकते हो, identify कर सकते हो. For the line, you have to use arrow over here. So arrow का मतलब it is one, okay. And for crow notation, you have to use a perpendicular lines. So that means you are having one relationship or one instance is only there for that. So faculty will work in only one department, but department will have multiple faculty. So what is the relationship over here? Many to Many one. to one. One to one. To one relationship. Is it clear? Is this clear to you? Is it Yes, clear? sir. If I just change, if I just swap it, अगर मैं department is associated or department has faculty in it, अगर मैं ऐसा relationship बनाता हूँ, so it will become one to many relationship. बराबर ना? यानी department को left में लिखता हूँ और faculty को right में कर दूंगा, तो it will become one to many relationship, right? Yes, Yes. sir. Okay, so Yes, that is sir. the third category, and last we can have is one to one relationship. Okay, so one to one का example that I can give is a person. Let's say a person is there. Okay, a person is an entity who has a relationship. Let's take as the relationship title as has. A person has another entity called as passport. Okay, the person के पास passport होगा. A person will have only one passport or will have many passports. One. It will have only one passport. Okay. Though ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका पासपोर्ट फुल हो जाता है तो अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो आपके पेजेस खत्म हो जाते हैं बिकॉज फॉर इमिग्रेशन या आप दूसरे सर्विसेज के लिए जब जाते हैं तो स्टैंप लगता है पासपोर्ट में. सो इट गेट्स एंडेड. सो आपको क्या करना पड़ता है, पासपोर्ट को रिन्यू करना पड़ता है. तो रिन्यू में क्या होता है, आपका पासपोर्ट वो डिस्कार्ड करके नया पासपोर्ट आपको दिया जाता है या स्टेपल कर दिया जाता है. ओके, सो इसका मतलब ये नहीं कि आपका मल्टीपल पासपोर्ट है. यू कैन हैव मल्टीपल, एज इन माय केस आल्सो आई हैव two passports with me, but that does not mean कि I'm having two different passports. The passport number will be same, the identification will be same. What I will have is I will be having two attached passport right now. Okay, so वो staple करके रख दिया जाता है क्योंकि आपका पेज खत्म हो गया. Okay, so उसके लिए वैसा किया जाता है. So every individual will have only one passport to that person, right? So person का passport से relationship क्या होगा? One person will have one passport. Clear with that part? What about passport associated with the person? एक पासपोर्ट पे एक ही आदमी का होगा या एक पासपोर्ट मल्टीपल पर्संस का भी हो सकता है? Is a passport associated with only one person? One person. One person. So one person will have only one passport. Similarly, one passport will have only one person associated with it. So this relationship will be, what will be the relationship? One to one. One to one. One to one relationship. Okay, one to one. और अगर आपको सिर्फ ये नंबर्स यूज नहीं करना है तो आप यहाँ पे एरो ही लगा सकते हो. सो एरो का मतलब क्या है? इट इज वन टू वन रिलेशनशिप. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. So that is the mapping cardinalities that I wanted to discuss. अगर definition लिखना है, so you can just write down the definition in one to one. Here, one instance of an entity type has exactly one instance associated with the other entity. As simple as that. So diagram की मदद से भी अगर आप लिखना चाहो तो आप आराम से definition लिख सकते हो. Okay. So I don't think so I require to put a dictation or dictate करके अगर आपको समझाया जाए तो कुछ आप ज़्यादा सीखोगे. मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा. So do you want me to give the definition for it? Yeah, it is self-explanatory. The diagram is self-explanatory. क्या करूँ? Definition दूँ आपको? No. It is self-explanatory, right? Okay. So मैं सिर्फ एक काम करता हूँ. Just ठीक है चलेगा, मैं बाद में बताता हूँ. Okay, just write down the example, all of you. We'll just note down an example.
एक एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा फटाफट समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक ER डायग्राम बनाना है. ओके, so write down the example. Construct an ER diagram. Construct an ER diagram. Construct an ER diagram for a hospital. For a hospital. Construct an ER diagram for an hospital. Just a second. Construct an ER diagram for an hospital with a set of patient, with a set of patient, with a set of patient, and a set of and a set of and a set of medical doctors and a set of medical doctors associated with each patient, associated with each patient, associated with each patient. Full stop. The database also holds a record. The database also holds the medical record. The database also holds the medical record of the patient, of the patient, of the patient, of the patient present in the hospital, of the patient present in the hospital. So this is the complete scenario that is being given to you. What is the scenario? What you need to do? What is the output that they want? What they want from you? What is the solution that you want to give? ER diagram. So you have to give an ER diagram. So the output should be an ER diagram. आपको एक ER diagram बना के देना है. Okay. So that is the output that they want. और scenario क्या दिया है? एक hospital है. Okay. उस hospital के अंदर कुछ patient है. तो उन patient को monitor करने के लिए there will be some doctors that will be there, and patient will have some medical record associated with them. Okay. तो ये ER diagram, इसका आपको database बनाना है. तो इसके अंदर आपको पेशेंट का डिटेल होना चाहिए, हॉस्पिटल का डिटेल होना चाहिए, पेशेंट को कौन सी बीमारी है या कौन से डॉक्टर उसको देख रहा है, उस डॉक्टर का डिटेल क्या है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड आपको एक टेबल में रखना है. लेकिन अगर आप, मैंने लास्ट टाइम बताया था, आप चाहो तो सारा का सारा एक टेबल में रख लो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डेटा को रिट्राइव करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को अपडेट करना, ये डिफिकल्ट हो जाएगा आपका. अगर आप चाहो तो एक एक्सेल शीट में सारा डेटा रख सकते हो. So what is the best approach? The best approach is you have to make different tables. You have to identify the different entities. So the first step in constructing an ER diagram, so just write down the steps of constructing an ER diagram. तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, that is called as identification of entity. Okay? तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको एंटिटी क्या क्या यूज हो रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटी इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू. So as per the given scenario, can you list down the entities that has been identified, that you can identify? What are the real world object that you can see from that particular thing? जिसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे. पेशेंट एंड डॉक्टर. पेशेंट यानी एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. सेकंड, डॉक्टर, एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. बराबर. उसके अलावा मेडिकल रिकॉर्ड, एक मेडिकल रिकॉर्ड दूसरे मेडिकल रिकॉर्ड से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. ओके, बराबर. देन फाइनली वी हैव द हॉस्पिटल, द ओवरऑल हॉस्पिटल. सो आई नीड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट हॉस्पिटल. सो हॉस्पिटल का कुछ नेम होगा, कुछ एड्रेस होगा, कुछ टेलीफोन नंबर होगा. तो मेजरली यही एट्रीब्यूट होगा, यही एंटिटी होगा बैट मैक्स. इसके अलावा कोई और एंटिटी की जरूरत है? Do you want some other entity? Though as per your problem statement it does not specify कि वहाँ पे employee की भी जरूरत है, but they have the employee also. So अगर problem statement में नहीं है तो आपको जरूरत नहीं बनाने की. Okay? So उसके अलावा क्या कोई स्टूडेंट की जरूरत है यहाँ पे हॉस्पिटल में? Does a student entity required in it?
Does a hospital have a student in it? So No. though a student is an entity, it is not part of that scenario, so it is not required. Similarly, teacher is also an entity, but it is not part of that scenario. So only that scenario, only that entity that needs to be identified, who plays an important role in that particular scenario. Is it clear? So first step is you have to identify the different entity who plays a role in that particular scene. Is it clear? The first step is clear to you? Step number 2. Yes. Step number 2, after identifying the entity, what is the second thing that you can do? Have any guess? Exactly. Attributes. So second thing is identify the attributes. Okay? Or list the different attributes. Identify or list out the attributes. Why we list out these attributes? ताकि एक entity को दूसरे entity से अगर आपको फर्क करना है, एक patient को दूसरे patient से अगर आपको differentiate करना है, तो वो आपको उसके attribute को आपको define करना पड़ेगा. Okay? So let's assume patient is an entity. So ये patient एक entity को दूसरे patient से आप कैसे differentiate करोगे? What are the attributes that you can have? Address. Patient का address. Patient will have its address. इसके अलावा patient will ID. have, Patient Patient number. rather than patient number, I can have the social security number. मुझे नहीं लगता patient का number होता है. Patient will have its identification with the help of identity card that it supports. So US के अंदर we call it as a social security number. In India we have either PAN number or we can have Aadhaar number. Okay, so that we have. टाइम हो गया सर. Okay. ठीक है, खत्म करते हैं. लास्ट खाली सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कैसे करना है और मैं आपको बोलता हूँ आप बना के लाओ और अगली बार हम लोग कंपेयर कर लेंगे. ठीक है. सो 2 और स्टेप बचा है इसके अंदर, सिर्फ वो मैं बता के फटाफट खत्म करता हूँ. विद इन 2 or 3 minutes it will get over. So we have patient social security number, then we have patient contact number that we can have. Okay, we can have patient का सबसे important तो उसका नाम है, तो नाम भी लिखना पड़ेगा. Patient will have a name. बराबर. So you can if you want you can have the composite name as well. So patient will have last name, first name and last name. Okay, so आप ऐसा भी कर सकते हो. जो भी आपने पढ़ा है अब तक वो सब चीज आप यहाँ पे बना सकते हो. ओके, सो सोशल सिक्योरिटी नंबर विल बी की एट्रीब्यूट और विल नॉट बी अ की एट्रीब्यूट. Key attribute. Key आपको attribute. उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा. कॉन्टैक्ट नंबर विल बी मल्टी वैल्यूड और सिंगल वैल्यूड. Multi-value. सो आपने वैसा बना दिया इसको. ठीक है. सो आपने बेसिकली क्या किया, आपने एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई किया, आपने टाइप ऑफ एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई किया और आपने उसको बना लिया हर एक एंटिटी का. दैट इज योर सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप इज after identifying the entity, after identifying the attribute, what is the next thing that you need to have in ER diagram? Relationship. Exactly. So third is identify the relationship. Okay, or define the relationship. So I will write, rather than identifying, I have to define the relationship. So define relationship. So what are the relationship that I have? और किसके किसमें के बीच में relationship होगा? Hospital और patient के बीच में कोई relationship होगा? Doctor. Hospital और patient के बीच में relationship होगा? Yes. So a hospital has patient, right? Hospital has patient. So I'll just write down over here, patient. उसके बाद hospital और doctor के बीच में कोई relationship होगा? So a hospital has doctor also. Hospital has doctor. उसके बाद patient और doctor के बीच में will there be relationship? Yes. So doctor monitors. किसको मॉनिटर करेगा डॉक्टर? किसको मॉनिटर करेगा? पेशेंट. Patient. ओके. एंड फाइनली एक बच गया अपना, एक एंटिटी बच गया. क्या? Medical मेडिकल record. रिकॉर्ड. अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरा अच्छा ईआर डायग्राम होगा या बुरा होगा? बुरा. बुरा, क्योंकि अगर मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, वो कनेक्टेड नहीं है, तो मुझे पता कैसे चलेगा किस पेशेंट का रिकॉर्ड है? सो मेडिकल रिकॉर्ड किससे कनेक्टेड होगा आपके हिसाब से? Hospital. पेशेंट.
So patient, a patient has medical record. बराबर? Is it clear? Yes, sir. ओके ये होने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक हॉस्पिटल में कितने पेशेंट होते हैं. विल इट हैव मल्टीपल पेशेंट और विल हैव ओनली वन पेशेंट? Multiple. 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 So we have to identify the mapping cardinalities. What about patient in hospital? A patient is there in one hospital or multiple hospital? One hospital. So a Multiple. patient will naturally multiple कैसे होगा? एक आदमी दो जगह अपना कैसे assess करवाएगा? So it has to be present in only one hospital. A hospital has one doctor or many doctor? Many. Many. Many doctor. A doctor is associated with only one hospital or multiple hospital? Multiple. So it is multiple. Many. In this case, in this case, a doctor can visit multiple hospitals. Okay, a doctor will have one patient or multiple patient. Multiple. It will have multiple patient. A patient will have one doctor. It can have multiple doctors. Multiple. So it depends on scenario to scenario. So generally we'll try to make a multiple डॉक्टर सपोर्ट. हमारे हॉस्पिटल में हम लोग मल्टीपल सपोर्ट रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, आई सेड इट डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियो. ओके, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक पेशेंट रेस्ट्रिक्ट करूंगा एक डॉक्टर के पास ही जाने के लिए, तो यहाँ पे आपको वन करना पड़ेगा. ओके, और अगर आप ऐसा रेस्ट्रिक्ट करते हो, अगर आपको ऐसा अलाउ करते हो कि एक डॉक्टर को, एक पेशेंट को मल्टीपल डॉक्टर असेस कर सकते हैं, इन दैट केस इट वुड बी मल्टीपल डॉक्टर्स. इज इट क्लियर? समझ में आया? Yes. A patient will have one medical record or multiple medical record? Multiple. Multiple. A medical record will be associated with only one patient or multiple patient? One. 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 यानी एक रिकॉर्ड जो होगा मेडिकल, एक एक्सरे रिपोर्ट एक ही पेशेंट का होगा. पांच पेशेंट का सेम मेडिकल रिकॉर्ड तो होगा नहीं ना, सेम एक्सरे होगा. So it is one. So these are the multiple relationship. तो क्या क्या हमने रिलेशनशिप देखा? One to many, many to many, many to many, one to many. So these are the mapping cardinalities that we have covered. So ये होने के बाद the last step is, what is the last step? Construct the AR diagram. So construct क्या करोगे? जो आपने बनाया है, जो आपने सारे स्टेप में आइडेंटिफाई किया है, सबको एक जगह पे असेंबल कर दोगे. Is it clear? Yes, sir. Can you do this? हाँ. अगली क्लास में ये करके आना. On Thursday when we will meet, we'll just try to identify कि आपने आइडेंटिफाई कर पाए हो कि नहीं कर पाए. Okay? I think on Friday, not on Thursday, on Friday. So please do this problem statement on your own. एक बार ये कर लोगे. जहाँ पे एट्रीब्यूट को अगर आप डिफरेंट बना सकते हो, जैसे कि मल्टी वैल्यूड हो सके या कॉम्पोजिट हो सके या सिंगल हो सके, वो आप वहां पे बना सकोगे तो ज्यादा बेहतर होगा. ओके, और सिमिलरली वीक एंटिटी होगा कि नहीं होगा वो भी अगर आप बता सको. फॉर एग्जांपल द मेडिकल रिकॉर्ड इन दिस केस कैन बी अ वीक एंटिटी. ओके, बिकॉज अगर पेशेंट नहीं है तो मेडिकल रिकॉर्ड किसका होगा वो आप बता नहीं पाओगे, बराबर ना. फॉर यूनिकली आइडेंटिफाइंग द मेडिकल रिकॉर्ड यू हैव टू हैव द आईडी ऑफ द पेशेंट आईडी, यानी पेशेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए आपको, तभी आप मेडिकल रिकॉर्ड आप बना पाओगे. सो इन दिस केस द मेडिकल रिकॉर्ड विल बी अ वीक एंटिटी. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो अगर जो भी सिनेरियो हमने पढ़ा है, और भी सिनेरियो हमें आगे डिस्कस करना है, जैसे कि स्पेशलाइजेशन, जैसे कि जनरलाइजेशन, जैसे कि एग्रीगेशन, उसके अलावा फुली डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी, ये सब कुछ चीजें हमें पढ़ना है जो हम और बेहतर तरीके से ER डायग्राम बनाएंगे. ओके, तो ये सिर्फ सिखाने के लिए था. अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था, जितने भी सिंबल्स हमने पढ़े, उसको रिप्रेजेंट करके हम लोग अगर एक ER डायग्राम बना पाएंगे तो वो हम बना के आप अगली क्लास में लेके आना और उसको और अच्छे तरीके से रिफाइन करेंगे इन द कमिंग नेक्स्ट लेक्चर्स. इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, Does sir. anybody has any doubt? Yes, sir. No, sir. Okay. So those who have, No. So those who have any doubt, they can remain over here. The rest of you can leave. Okay. So I'll be posting this lecture on the YouTube, so you can get the videos from the YouTube as well. Okay. And do subscribe the channel. Okay. Thank you guys. Thank you so much. You can leave now.